I have a one group of children who are actually peddling the drugs. They are actually very much involved into that. छोटी उम्र कितनी? They are 8 years. No, ma'am. 7, 8 years, 9 years. The concept was in the mind since 1990, but there was no donor who was convinced with this idea. We came across a large number of students who were out of school because they were staying on a street, especially on a payment. They were at the station time, they were begging, and so many kids. Almost 25 years completed. 25 years. We are Wow. celebrating the 25 years of the school on wheel. So that is a major reason that the children are not going to the school, because they have to support the family financially. So then she really convinced, but we take almost 1 year to convince the parents. Because parents, they said ki Didi, he has to earn. How do we without earning? So when we take a call when the child is finished his work, and then we call them to work. So motivating these kids and sustaining these kids is a big challenge, where it is depend totally on what you are teaching. 25 साल में आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे। So basically this kids यहाँ 10वीं तक पहुँचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हूँ आरजे ग्लेन आपके साथ। रोज की रोज हम आपके लिए कुछ ऐसे मुंबईकर लेकर आ रहे हैं who have done iconic things, मुंबईकर्स who have gone beyond their duties and who have created a mark for themselves and for others in society. We've got Beena ji today with us, associated with a very, very brilliant cause. Fever, iconic Mumbaikar. Beena ji, thank you so much for joining us on Fever FM. You are Fever, iconic Mumbaikar, because you've done an iconic thing. Thank you. School on wheels, यानी कि मोबाइल स्कूल, जो मोबाइल वैन्स जो होते हैं, जो पॉइंट ए से पॉइंट भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनमें आपने एक स्कूल की शुरुआत की थी। और ये अब नहीं, मैंने तो अभी सुना है इसके बारे में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 90s में। Yes, it is 1998. The concept was in the mind since 1990, but there was no donor who was convinced with this idea. So 98, where we got the very first bus by Japanese consulate, and we have started this school on wheel. So it was something really very fulfilling and very satisfactory move. मैं हमेशा हमारे आइकॉनिक मुंबईकरों से पूछता हूँ, what was the purpose? पर्पस क्या था? क्योंकि कोई भी चीज हम अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हैं ना, एक पर्पस होता है। Sure. तो क्या पर्पस था आपके लिए, क्यों आपने ये स्टार्ट किया? See, basically when we started this concept of non-formal education for out-of-school children, we came across a large number of students who were out of school because they were staying on a street, especially on a payment. They were at the station time, they were begging, and so many kids. तो बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए yes, है। sir, yes, sir. Okay. Yes, sir. This is totally for underprivileged children and who are out of school. जो कभी भी स्कूल में जाने की संभावना ही नहीं है. So those kind of children we had found and we started working with them. But we realized that taking a class on a street is not a very good healthy classroom. And there was a lot of disturbance also where children could not concentrate. So at that particular time, though we done almost 5 to 6 years on the street, we realized that especially me, when I see a lot of mobile project like mobile juice wala, mobile computer center also, I don't know, that time it was not there. But then I said, why not the school? Why not the school where the children can come in the bus and they go back to the street, you know? So this is what something which has started in 1998. तो 1998 में जो आपने शुरुआत की थी इस मुहिम की, अब 2025 ऑलमोस्ट 25 years completed. 25 years. We are Wow. celebrating the 25 years of the school on wheel. And what a beautiful journey this has been. इस पूरी मुहिम में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ गए। 100%. Yes, many more. Many children, many teachers, many well-wishers, donors. Because this is without donors you cannot run. So basically, if you will ask me, within 25 years, more than 10 school on wheel which have been launched into the city of Mumbai. और ये कहाँ हो रहा है स्कूल ऑन व्हील्स? Yeah, see, basically we started with the Cuff Parade, I mean to say Apollo Bandar, Fashion Street, CST station, VT station, Churchgate station, and then it is spread out all over the Mumbai. So right now we have it into Jogeshwari, Goregaon, then you will ask me the Govandi, then it is Sanjay Gandhi National Park ke jo bacche hain, who are actually staying inside the Pada, you know, inside the this national park. For them also we are running the school on wheel because their schools are 8 to 10 kilometers away from their house. So like that, wherever we find children on a street, and wherever they are finding going school to difficulty, we immediately park the bus and we start the classes. मैं ये मानता हूँ कि हमारे भारत देश में जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, जरूरी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अब जो ये युवा पॉपुलेशन है, उसको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उनको एजुकेट करते हैं, यू गिव देम दैट स्टडी, यू गिव देम दैट, एंड वी बिकम दैट कैटलिस्ट, एक जगह से एक कॉन्ड्यूट जिसको बोलते हैं, जिसके जरिए वो ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन विच इज द मोस्ट बेसिक थिंग दे हैव टू, बिकॉज इफ दे डू दैट, वो आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल एंड
And I actually take my words back. It's not a beautiful end. It's a beautiful start. Start. आपके हिसाब से what is that one reason जो बच्चे बहुत ज़्यादातर drop out करते हैं from school, especially the underprivileged kids? क्या है? आपने क्या Yes. देखा है इन 25 सालों में? See, basically, those kids who are migrated from to the city for the reason of the earning, you know, not for the education. जो बच्चे बॉम्बे में आए हैं, वो they need to earn and support the family. So that is a major reason that the children are not going to the school, because they have to support the family financially. Second thing, there are many children who are staying very far from the school. So they are not able to go, because 5 years kids cannot go all alone to the school if the schools are very far. Correct. So that is the second reason. And there are third reason that the children migrate a lot. They go back to this village and like that. So these are the three major reasons which we found which are the dropping out of the children. Also आपने जो बात बोली, अगर बच्चों की एनर्जी को बहुत ही छोटी एज से ठीक से चैनलाइज नहीं किया गया तो वो रॉन्ग जगहों पर वो जो एनर्जी है वो डिस्पर्स होती है. True. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रग एडिक्शन का. Can I give you one Yes, example? please. I have one group of children who are actually peddling the drugs. They are actually very much involved into that. So when we found this, we were really shocked कि इतने छोटे बच्चे और भी छोटी उम्र कितनी? they are 8 years. No, ma'am. 7, 8 years, 9 years, they are into that. We have seen, we are 7, working with them. 8-year-old 8 years children child peddling who doesn't know what he's been actually पहुंचाना है, इसको पहुंचाना है, उसको पहुंचाना है. So they are actually doing the kind of a पहुंचाने का काम, you know, वो पुड़ी Middlemen बन रहे हैं. Yes, पुड़ी जैसा. तो वो इस प्रकार का काम कर रहे थे. तो हमको जब ये बच्चे को हमने पूछा, तो चिल्ड्रन सेड कि नहीं, मेरे को ये भैया ने दिया, ये दीदी ने दिया कि जाके पहुंचा दो. You know, so when he said क्या पहुंचाना है, आपको मालूम है? तो उसने बोला नहीं दीदी. तो when we saw it, it was a drugs. You know, so like that there are so many kids who are in such a kind of a work which we want them to pull it out, and we really wanted to put them into the formal school and do that. They really can do a better in their life. तो आपने उन बच्चों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म की है by giving them the power of education and Yes, teaching them. very much. और ये कितनी बेहतरीन बात है. मैं ये बार-बार रिएटरेट करता रहता हूँ कि अगर बच्चे पढ़ते हैं, and the greatest power, I keep using this line, is to empower. When you give the kids this ability to study, to become something in life, they can be hopeful for a better future. Challenges जो आप लोग फेस करते हैं, इन पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आपके बच्चों को आप स्कूल भेजिए, क्योंकि जब आप उस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, योर बेसिक नीड इज फूड, हंगर. एट दैट टाइम आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया इनको स्कूल भेजिए, इनको एजुकेशन दीजिए. आपको यू हैव टू पुट ब्रेड ऑन द टेबल, और उनकी मजबूरी है. तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कैसे वो रोल प्ले करते हैं? हाउ डू यू convince the parents? See, this is really a very challenging job to convincing parents. So basically parents ko, especially in the parents, we will work with mothers first, you know, because mother are the easy target. When we tell that your child will learn something better and will be a better human being into the future, so then she really convinced, but we take almost 1 year to convince the parents. Because parents, they said ki didi he has to earn. How do we without earning? So when we take a call when the child is finished his work, and then we call them to work. कि बहुत सारे fathers का situation ऐसा होता है, sadly alcoholism, Very drug much. addiction. सही. वो सारी चीजों को आप लोग कैसे कॉम्बैट करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बहुत बड़ा चैलेंज है. वी हैव अ वेरी रेगुलर होम विजिट. जब भी जो टीचर्स क्लास लगाने से पहले शी गोज टू द ईच हाउस ऑफ द वेरेवर द चाइल्ड इज स्टेइंग, शी गोज एंड मीट द पेरेंट्स. एवरी डे का काइंड ऑफ हैमरिंग टू द पेरेंट्स लाइक अ मदर एंड फादर रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. वो हर दिन आते हैं, तो पेरेंट्स भी कभी लगता है कि अरे ये दीदी हर दिन आती है, तो आज तो उसको भेज दो. सो इसके हिसाब से वी हैव अ वेरी रेगुलर फॉलो अप home visit and talking about the good thing, you know, कि देखो ये बच्चा ये हमारे पास आया और ये इतना अच्छा किया, वो अच्छा कर रहा है. So giving a very successful example to the parents, giving a hopes that your child can do a much better what he's doing. So this is something which is really happening a lot at the doorstep. You know, we spoke about challenges जो आप लोग फेस करते हैं, लेकिन क्या-क्या सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं? और क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है कि अलग-अलग चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि अलग-अलग डेमोग्राफिक्स के बच्चे आते हैं. आपको कोई 5th में होगा, कोई 7th में होगा, तो हाउ डू यू स्टैंडर्डाइज द एजुकेशन? सो एज ग्रुप इज आल्सो डिफरेंट, राइट फ्रॉम 7 to 12 या 14 years तक के बच्चे हैं. सो बेसिकली वी हैव आवर ओन डिजाइन करिकुलम वेयर वी हैव अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, लाइक द चिल्ड्रन हु आर इनटू द सेम एज, वी मेक देम टू सिट सेम group, and like that we have a group teaching. And that is how we start with the normal alphabets and letters, and then eventually we take them to the inner year by reading this program. So it is a very much required a lot of use of teaching
टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्ले वे मेथड, बिकॉज ये बच्चों का कंसंट्रेशन करना ही बहुत, मोटिवेशन करना, कंसंट्रेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चाइल्ड सेंट्रिक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्ले वे गेम्स। सो पूरा जो करिकुलम है वो पूरा चाइल्ड सेंट्रिक और बच्चों को गेम्स के द्वारा ही सिखाया जा रहा है। नहीं तो वो बच्चे बैठते ही नहीं है और आना भी नहीं चाहते। सो मोटिवेटिंग दिस किड्स एंड सस्टेनिंग दिस किड्स इज अ बिग चैलेंज वेयर इट इज डिपेंड टोटली ऑन व्हाट यू आर टीचिंग। और किस तरह से आप उन्हें वो सिखा रहे हैं। Yes. आप सक्सेस स्टोरीज का जिक्र कर रहे थे। टेल अस अबाउट वन और टू ऑफ योर सक्सेस स्टोरीज। 25 साल में आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे। Yes. कुछ हमें बताइए, शेयर कीजिए, बिकॉज़ दिस इज योर विक्ट्री, दिस इज योर विन। I would like to say the very first when we started from the Crawford Market and अपोलो बंदर साइड। हाँ अपोलो बंदर, वेयर इज मंत्रालय के पास गांधी गार्डन है, वहाँ का जो बच्चा है उसका नाम राहुल है। ही इज एक्चुअली नाउ अपीयरिंग CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर रहा है। ही इज स्टिल ऑन द स्ट्रीट, ही जस्ट स्टार्टेड मूविंग टू द नियरेस्ट स्लम। बट द थिंग इज दैट कि व्हेन वी हैड अ प्रोग्राम ऑफ 25 years celebration, we look for all the kids and I found a number of children who are doing so well. There is a one girl which is like Anjali. She's staying at Wadi Bandar, which is on the PD Miller Road, and that she is actually pursuing her nursing, you know, nursing. And she said the way she was talking, I got a tears in my eyes, क्योंकि आज की तारीख में भी वो इतनी स्ट्रगल कर रही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतना तक पहुंच पाएगी। So there are so many, there are one kids who are actually been in a 12th grade. So basically this kids यहाँ 10वीं तक पहुँचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ चिल्ड्रन चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर रहे हैं, नर्सिंग का कर रहे हैं। देयर आर किड्स हु आर गोइंग फॉर द कैटरिंग प्रोग्राम, यू नो, हु इज इंटरेस्टेड। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली देयर आर चिल्ड्रन हु आर डूइंग, रियली ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव इट टू द लाइफ। You guys have given them a second chance. Yes. And this is so important. मैं हमेशा ये कहता हूँ, लाइफ आपको हमेशा सेकंड मौका देती है, आपको हमेशा एक और चांस देती है, and it's about what you do with your life. But the fact that you are working together makes you a super human being. Your entire team, we salute you for this. And how can us as Mumbaikars join your cause? कैसे हम इसका हिस्सा बन सकते हैं? Definitely. See, without support of the well-wishers and the Mumbaikars, we could have not done anything. See, there are so many things where they can come and encourage children. They can help us out into teaching children. There are many who are actually been really appreciating the efforts. But with the appreciation, we need a lot of support, like helping us out into the fundraising. Because ये जो concept है, it is little expensive. Let me tell you. मैं यदि slum में कर रही हूँ तो उसमें मेरे को इतना खर्चा नहीं होता है जितना स्कूल ऑन व्हील पे होता है। सो कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली ऑल्सो वेरेवर दे कैन डू दैट, एजुकेशनल मटेरियल ऑल्सो वी एक्सेप्ट। सो लाइक दैट वेरेवर दे वांटेड टू चिप इन एंड वेरेवर दे वांट टू हेल्प अस आउट, दे आर ऑलवेज वेलकम एनी टाइम। Beautiful. And how can we get in touch with your team? Yes, I got an office into Grant Road, and I can share my numbers and the email ID also. What we'll do is we'll drop the social media handle and the email and all the numbers below. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इनके साथ टच में रह सकते हैं। मीना जी, you are our fever iconic Mumbaikar today for your iconic service to society. जो अपने लिए करे वो आम मुंबईकर, लेकिन वो दूसरे के लिए कुछ करे वो है fever iconic Mumbaikar. मीना जी, thank you very much for your time. Thank you very much for giving us opportunity. Thank you. Thank you.